A very good evening. Welcome to Football Today. As usual, you are joined by the cruise control duo Shubham and Aparup, and we are here to discuss lots of speculations and lots of transfer news and the upcoming final, which will be happening in the Carabao Cup in England. And for that, we have the finalists as Chelsea and Liverpool. Well, Liverpool also have a lot of injury issues there in the final of the Carabao Cup, and we are here to discuss regarding the same. Well, I'm joined by Aparup. Welcome, brother, and welcome to the stream. And thank you so much for joining, everyone. Yeah, I mean, what do you think about the final? Who should win the Carabao Cup? Yeah, thank you, Shubham. Good evening to you, Shubham. Good evening to our viewers watching this program. ये वीडियो एंड तक देखना, बहुत सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, अपकमिंग वीडियो. So please do stay tuned till the end of the video and please do like and share and subscribe to our channel. And talking about the EFL का बहुत जल्दी से मतलब EFL का फाइनल आ चुका है. The first like the tournament final of this year I must say. एक तो प्रीमियर लीग टाइटल होता है, एक एफए कप होता है, बट प्रीमियर लीग में अनदर टाइटल इज देयर. प्ले टीम्स फाइट फॉर इट, टीम्स प्ले फॉर इट. मतलब किसी और लीग होता तो शायद इतना मतलब हाइप नहीं होता इस लीग मतलब इस मैच को लेकर, दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स. बट हाँ, क्योंकि प्रीमियर लीग है तो हाइप तो है. एंड Right. प्लेड बिटवीन चेल्सी एंड लिवरपूल, सो दिस इज ह्यूज. दिस इज अ मतलब ग्रैंड एनकाउंटर. मतलब ये क्या ही बोले, अभी चेल्सी का करंट फॉर्म जो हमने देखा है, इट्स सुपर. They have matlab they drew a match against Manchester City, which is exactly matlab this was against the odds completely according to me. At the Etihad, that too. And they're doing that at the Etihad also. Exactly, that's a very important and vital point. They're drawing against Manchester City, that too in Etihad, 1-1 draw. And surprising fact कि Chelsea dominated the match. मतलब ऐसा नहीं था कि like City dominated the entire match. Chelsea को मौका मिल गया, उन लोगों ने स्कोर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है. They were playing great football, I must say, in the first half. Second half में खैर City ने dominate कर दिया थोड़ा, पर they could not bring a victory. तो ड्रॉ किया चेल्सी ने. एंड लिवरपूल का अगर हम कंसीडर करें तो वी कैन सी मतलब मैड्रिड की तरह ही इनका हालत हो चुका है ऑलरेडी. बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो चुके हैं. लाइक टॉकिंग अबाउट जोटा, जो लास्ट डे इंजर हो गया. प्रोबेबली ही प्रोवाइडेड एन असिस्ट एंड उसके बाद ही उसने इंजरी पिकअप कर लिया. Mo Right. Salah has returned. That is also very important for all Liverpool fans. Hmm. Very like anchor man for Liverpool. वो रिटर्न हो चुका है लिवरपूल में. एंड उसने इम्पैक्ट भी कर दिया, शायद एक गोल भी किया एंड असिस्ट भी डाल दिया उसने फर्स्ट गेम में. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टॉकिंग अबाउट द अदर इंजुरीज, मुझे लगता है कि ये एलिसन नहीं है, ट्रेंट नहीं है, कर्टिस जोन्स नहीं है, तो दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, आई मस्ट से. मतलब देख यार, इनके पास तो मतलब ऐसा नहीं है कि इनके पास प्लेयर्स है नहीं, दे हैव प्लेयर्स. पर हाँ, ट्रेंट का मिसिंग है. डियोगो जोटा इज मिसिंग. जोटा का शायद सब्स्टिट्यूट फिर भी मिल जाए. सबोत सलाई वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब जो देखते हैं, फॉलो करते हैं लिवरपूल को, वो लोग जानते हैं सबोत सलाई हैज बीन प्लेइंग अ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर देम इन मिडफील्ड. ही हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, एंड ही हैज बीन डिलीवरिंग बॉल्स इनटू द लास्ट थर्ड्स फॉर मेनी मतलब मेनी डेज. इंपैक्टफुल प्लेयर बहुत ज्यादा ही है वो, मेरे मतलब अकॉर्डिंग टू मी. Right. So what do you think? मतलब तुझे क्या लगता है? Is this in slightly favor of Chelsea, keeping in mind their last like draw, which is almost like they're considering it as a victory against Manchester City, against Liverpool, who are like an injured Liverpool? Well, yeah, I mean, the form in which Chelsea are in right now, obviously, I would keep Chelsea in front compared to Liverpool. But obviously, it's Chelsea and their form right now this season as well as the previous season was not that good. So, yeah, in that perspective, Liverpool have their forwards also. Apart from Jota, if we consider, the forward options for Liverpool, apart from Jota, there are a lot of options starting from Darwin Nunez. ये तो बिल्कुल है. या वो बहुत सारा ऑप्शंस रहता है, तो मतलब फॉर गोल करना इनके लिए कोई बात नहीं है. या आई मीन द क्रिएटर ऑफ द गोल, या दैट वुड बी अ प्रॉब्लम बिकॉज दे आर मिसिंग Szoboszlai there. That would be a problem in the midfield. That could arise a problem, but hopefully Gravenberch can Yes. cater his absence there. But apart from that, साला भी वापस आ चुका है, तो ऐसा भी नहीं है हाँ, कि मिडफील्ड से डिलीवरी चाहिए होगा. ऐसा right, भी हो सकता है कि वो बंदा खुद ही जाके स्कोर कर दे. So right, it's a probability when Mo Salah is back in your team and he's playing, and he has already impacted already in his first right, appearance. right, right, exactly. So like yeah, ऑप्शंस तो what are बहुत your सारे हैं, predictions? वैसा कोई इशू नहीं रहेगा. बट आई वुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस चेल्सी आर इन अ वेरी गुड फॉर्म राइट नाउ, and since they're clicking right now, they have their artillery and their arsenal
within their arsenal, right? Not the Arsenal Football Club. So I mean, they have their arsenal in their squad. So because of that, I would keep Chelsea ahead of Liverpool as of Sunday. Yeah, this is interesting. This is very interesting. Maybe a short score line for our viewers. Like, what are you thinking? मतलब क्या सोच रहा है? Score line क्या होने वाला है? Is it going to? First of all, tell me, is it going to go to extra time or not? देखो भाई, ये अगर एक्स्ट्रा टाइम में जाता है तो लिवरपूल निकाल देगा, ये दैट्स फॉर Okay. श्योर। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा टाइम में जाता है, इफ Chelsea has to win this match, they have to kill the game within the first 45 minutes, because as Right. we know, Liverpool will come back in the second half. They will score goals. They have a habit of scoring goals in the second half, and they always try to equalize in the second half, and they have won lots of matches from the second half, scoring goals in the latter half of the game. So I would say, like, Chelsea, if they are to win, they have to score a minimum of 2 goals in the first half and restrict Liverpool to one. So I would say, if the result goes for Chelsea, they have to win it before 90 minutes, and the scoreline should be 2-1. ग्रेट टू हियर दैट फ्रॉम यू। मुझे भी ऐसा लगता है कि चेल्सी जीत जाएगा शायद, क्योंकि उनका ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि वो अभी ज्यादा अप नहीं है प्रीमियर लीग टेबल में, तो दे आर लाइक नॉट इन अ लाइक स्टेट राइट टाइम टू फाइट इन यूरोप प्रोबेबली नेक्स्ट सीजन। तो दिस कैन बी लाइक अ डोरवे फॉर देम आल्सो। ऐसा भी वो लोग Right, सोच सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो ट्रॉफी है फॉर श्योर, right, and secondly it will be a doorway to Europe if at all they do right. not like qualify for conference cup। मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस लीग होता है, अगर वो Mm, 7th में फिनिश नहीं करते, पकड़ लेते हैं, mm, तो it can be a doorway for them to Europe also, so that is also important। एंड हाँ, right. फ्रॉम अभी चेल्सी लिवरपूल मैच इन ईएफएल का फाइनल, उसके साथ प्रीमियर लीग भी चलेगा। बहुत Mm, इंटरेस्टिंग अभी जो हो चुका है ऑलरेडी, एंड माय गॉड अभी क्या ही बोले इसके बारे में यार। मतलब एवरीवन इज वाचिंग, मतलब सबके आईज है प्रीमियर लीग टेबल में, एवरीवन नोज व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर देयर। 57, 56, 55, माय गॉड, मतलब एनीवन कैन बिकम द चैंपियन, एनीवन। एंड right. तुझे क्या लगता है, इज इट गोइंग टू गो लाइक दिस टिल द लास्ट डे? मतलब ऐसा हो सकता है क्या पहली बार कि ऑन द लास्ट डे 3 टीम्स आर फाइटिंग फॉर अ लीग टाइटल? आई डोंट रिमेम्बर एनी सच इंसिडेंट लाइक दिस बिफोर। ऐसा हुआ है क्या पहले? नहीं भाई, मुझे तो याद नहीं आ रहा। I mean, there has been several, last day battles between two teams who are fighting for the title. It was against Manchester United and City in the 11-12 in the 11-12 campaign. It was Liverpool and City again in the last to last season, probably, where Gundogan scored 2 goals consecutively. So I mean, I don't remember like three मतलब teams दिस are. इज गोइंग टू बी मच मोर क्रेजी देन आई थिंक दैट Right. लास्ट, मतलब वो जो सिटी ने जो पहला लीग जीता ना, लाइक ऑन हाँ, बेसिस ऑफ दैट गोल डिफरेंस, हाँ, दिस हाँ, इज गोइंग टू बी मच मोर ड्रामेटिक देन दैट। मुझे लगता है right, कि ऐसा right, होने right, वाला है इस सीजन, because right. that is considered as the most dramatic thing that can ever happen। Manchester just won the match and they thought they won the league, पर वहां पे एगुएरो के इंटेंशंस कुछ और ही थे। हाँ, पहला लीग उन्होंने कैप्चर कर लिया आफ्टर 90 मिनट्स। दिस इज सुपर, मतलब ये क्या ही, मतलब दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रीमियर लीग। एंड इट्स लाइक बिल्कुल वही सैंपल हमको देखने मिल रहा है इस सीजन। 3 टीम्स आर लाइक बैटलिंग इट आउट एंड दे आर गिविंग देयर ऑल। आर्सेनल, right. मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, तीनों मतलब इन तीनों कमाल के फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग द हाईएस्ट ब्रांड ऑफ फुटबॉल। स्पेशली मुझे लगता है कि यार यहाँ पे मेंशन जाना चाहिए आर्सेनल को यार। मतलब इफ यू Hmm, जस्ट लुक एट देयर गोल डिफरेंस राइट नाउ, दे आर सिटिंग ऑन hmm, नंबर 3, बट दे हैव right. प्रोबब्ली द हाईएस्ट गोल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने 36. स्टैट्स देखा। Yeah, yeah, 36. This is huge. They are winning matches by a large margin, and this is going to help them for sure, क्योंकि हमने देखा है कि प्रीमियर लीग में होता है ऐसा कि ऑन बेसिस ऑफ Hmm. गोल डिफरेंस ऐसा कुछ, मतलब ट्रॉफी इधर उधर हो सकता है। इट हैज हैपेंड इन द पास्ट, बिल्कुल, बिल्कुल, इट बिल्कुल। कैन हैपन अगेन, एंड मे बी इट हैपेंस इन फेवर ऑफ आर्सेनल। आई प्रे कि Right. चलो अभी टाइटल जीत Moreover, जाए। Arsenal has to play against City. City has to play against Liverpool. So I ये mean, भी मैचेस अभी बाकी है, तो हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब क्या, मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द इंटेंसिटी दैट इज गोइंग टू गो ऑन इनटू दिस मैचेस। मतलब these are right, going to be right. really interesting, मतलब सुपर। एंड अचानक से हम अगर देखें तो नंबर 6 में एक टीम अभी मतलब ताक झाक मार रहा है। ये होना नहीं चाहिए था, दिस शुडंट हैव हैपेन अकॉर्डिंग टू मी, Hmm. पर ये हो चुका है, छत से पता नहीं ऊपर आ गया कैसे। ये। हाँ, मतलब नो वन इज एक्चुअली नोटिसिंग देम, पर जस्ट टू ब्रिंग लाइक इन अ शॉर्ट नोटिस टू द ऑडियंस, जस्ट स्लाइटली ऑन द टेबल, दैट अगर मैनचेस्टर नेक्स्ट मैच जीत जाता है, Hmm.
गोल डिफरेंस मैनचेस्टर का है सिर्फ 1, सो दैट इज द प्लेस दे आर लैगिंग वे बिहाइंड द अदर टॉप 5 टीम्स. आई डोंट नो ये कैसे हो रहा है, पर अ टीम Hmm. सिटिंग इन पोजीशन 6 उसका गोल डिफरेंस 1 है. तो Hmm. वो लोग गोल्स बहुत ज्यादा कंसीड कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है. Uh, गोल डिफरेंस के बेसिस में उनका अगर रेशियो देखे तो प्रॉब्लमेटिक है. पर hmm. इफ मैनचेस्टर विन द नेक्स्ट मैच दे विल बी टाइंग द पॉइंट्स विद टॉटनहम. Right. एंड कीपिंग इन माइंड टॉटनहम अभी अच्छी फुटबॉल खेल नहीं रही है. Hmm. द लास्ट फ्यू मैचेस दे हैव Hmm. बीन नॉट बीन अप टू देयर बेस्ट. Hmm. एंड हमने देखा है कि विला भी मतलब थोड़ा स्कैटर कर रहा है. तो कुछ Right. भी हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर देयर इज अ चांस ऑफ like United for sure to qualify in the Champions League. But right now Hmm. there is like a glimmer of hopes at least that it can happen, maybe. क्योंकि Right. डिफरेंस 5 पॉइंट्स पे आ चुका है एंड लाइक 13 गेम्स आर रिमेनिंग, राइट? तो 5 पॉइंट्स Right. मतलब 2 मैचेस. तो दिस इज Right. इंटरेस्टिंग. तो तुझे क्या लगता है, इज इट इज इंटरेस्टिंग और नॉट? मतलब व्हाट डू यू थिंक? देखो अभी जो सिचुएशन है इधर, ठीक है, यूनाइटेड शुड क्वालिफाई फॉर यूरोप. आई डोंट नो वेदर दे वुड बी एबल टू क्वालिफाई फॉर यूरोपा लीग, बट दे शुड बी एबल टू क्वालिफाई फॉर कॉन्फरेंस लीग, इफ नॉट यूरोपा. If Europa, then obviously it's good, but the for the fight for the fourth position will be one to look into, because in the fourth position also Manchester United and Villa are separated by probably 5 points. 5 पॉइंट्स, Five हाँ points. हाँ. Yeah. So I mean the fourth position ये is तो also प्रीमियर at लीग risk. में मेकअप हो ही सकता है, राइट? मतलब इफ दे Hmm. लूज 2 बैक टू बैक मैचेस एंड इफ Hmm. मैनचेस्टर कैन विन इट, हमने प्रीमियर लीग में ये देखा, ये हो सकता है बिकॉज इट्स प्रीमियर लीग, Hmm. प्रोबब्ली इट कैन हैपन, राइट? Right, exactly. And we saw it in versus Arsenal also the previous year. I mean, they were ahead of City by probably लास्ट 7 points at ईयर. one particular time, I can remember, but still they bottled it. So, I mean, moreover, that season Arsenal had to play City twice. Well, that was the reason behind it also. And but this season, I would say like it's all even Stevens at the top, because just 1 point difference with almost close GD of all It's the just a teams. match. It is just a Just matter a of a match. One loses, the match. other will climb to the top of the Premier League table. It's as simple as that. Obviously, We and just cannot Arsenal's go to last five fixtures of the campaign, this year's campaign, would be pivotal for their title charges, because the last five games are most crucial for them. They have to face United, they have to face probably Tottenham. Okay. Moreover, I mean they usually bottle their leagues during the last 5 to 6 weeks. So I mean, yeah, that would be something to look into this year, because they and have उसी the टाइम पे शायद यूसीएल भी चल रहा होगा, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज आई Mm. कैन सी आर्सेनल क्वालिफाइंग वेरी इजीली टू द नेक्स्ट राउंड्स आल्सो. Hopefully, yeah, because at that time probably the quarters and the What semis are will be those? there. Because even the semis, you can say we can Yes, see Arsenal in the semis. It's not an impossible scenario for them right now. They are playing a if they great can brand of well, football and if they they can can play easily well, qualify. yeah, if they can play well, if they can play the way in which they are playing right now, there are chances for them to qualify for the semi-finals. But yeah, that let's wait and watch. एंड उनके पास तो अभी एफए कप है नहीं फाइट करने के लिए, तो दैट कैन बी लाइक Hmm. एन एडवांटेज, आई थिंक. तो हाँ, यही सिनेरियो Hmm. है प्रीमियर लीग के टॉप के टेबल का. 1 to 6 वेरी इवनली पॉइंट, मतलब कुछ भी हो सकता है. चैंपियंस 3 टीम्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है. फोर्थ पोजीशन में कोई भी आ सकता है. तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू थिंक अबाउट दिस लाइक करंट प्रीमियर लीग सिचुएशन. एंड क्विकली शिफ्टिंग टू लाइक अ वेरी लाइक क्या ही बोले, अभी पैलेस के साथ हमने देखा है, हो चुका है ऑलरेडी. एंड नहीं, लाइक सॉरी, नॉट द पैलेस थिंग, मैनचेस्टर सिटी. वेरी इंटरेस्टिंगली ये सैवियो वाला ट्रांसफर हो चुका है एंड नोबडी नोज इट. मतलब अभी बहुत जल्दी से ये ट्रांसफर हो गया. एंड यू मस्ट थ्रो सम लाइट ऑन इट बिकॉज यू आर द वन हु ब्रॉट लाइट टू दिस टू मी. सो प्लीज. Well, lots of transfer speculations, and what to say. I mean, the transfer loopholes. There are lots of transfer loopholes in this particular transfer, because if you can if you dig deeper, you would see that the person who owns Manchester City. Okay, firstly this player Savio was on loan to गिरोना. PSG the previous season. पीएसवी, हाँ पहले पीएसवी था, हाँ राइट राइट, Uh, हाँ. this season he's on loan to Girona, right? So, but he's actually owned by a club in Brazil. Exactly, I don't remember the name of that club, but he is owned by that club in Brazil, and that club is owned by the person who owns Manchester City. So it's like you are taking 10 grands from your pocket and depositing that 10 grands with interest in your own pocket. Okay. So, I mean, it's a big transfer loophole.
I don't know what to say regarding this, but This is very yeah, interesting यार, मुझे पता नहीं था. This is absolutely very super interesting. मतलब this should be like out in the open for everyone. मतलब this is actual loophole just mentioned right now. मतलब ये क्या ही हो. पर just talking about the player, he is a actually he's a very nice player and City ने mm, सट से इसको खरीद लिया. मतलब they have already got down into the transfer market and they are preparing their like battle army for the next season also. right. एंड हाँ यही सिटी का अभी ट्रांसफर सिनेरियो है एंड क्विकली मूविंग फ्रॉम सैवियो टू लाइक अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन इन इंग्लैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल आई मस्ट से यार इसको थैंक यू बोलने का वक्त आ चुका है द फेमस रॉय हाटसन पैलेस का इशू चल रहा था बहुत दिनों से हमने देखा एक लाइव स्ट्रीम में भी हम डिस्कस कर रहे थे प्रोबेबली द Mm, आर्सेनल गेम हुई राइट कि right. पैलेस कुछ इश्यूज चल रहा है द सपोर्टर्स मे बी द फैंस आर नॉट हैप्पी विद द थिंग्स व्हिच आर अंडरगोइंग इन क्रिस्टल पैलेस Mm. तो ये हम देख रहे थे कि हो सकता है एंड ये हो चुका है ऑलरेडी तो हाँ थ्रो सम लाइट ऑन इट Yeah, I mean, he has been an instrumental manager in the history of Premier League. He has worked with several clubs in during his tenure. Probably it's a 48-year long tenure for Roy Hodgson. Uh, but probably he deserved a better farewell as far as I'm concerned, because we all know that Crystal Palace are not a obviously full respect to them, but they don't have that artillery to go into the top four or top six. But even so, I would say the way in which he has managed the team over the last couple of years. Okay, I mean the rise of whatever Oli. limited resources मतलब क्रिस्टल पैलेस है we have managed it nicely exactly Yeah, exactly. I mean, he knows how to manage a club with limited resources. So, yeah, that those are the few qualities which he possesses, and he has been an instrumental figure in the history of English Premier League. And yeah, I mean, all the best to his on his retired life, and I hope that he gets the respect which he deserves in the days to come. या बिल्कुल यार ये बिल्कुल सही चीज तूने बोला है एंड पैलेस ने मतलब वो तो डिक्लेयर कर ही दिया है वो द न्यू मैनेजर हैज ऑलरेडी Right. got his duties already he is already probably in the training and all वो मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया है उसने ऑलरेडी ओलिवर ग्लासनर एंड हाँ ये अभी पैलेस का ये ट्रांसफर न्यूज है दिस हैज बीन हैपनिंग वेरी इंटरेस्टिंग लाइक प्रीमियर लीग ट्रांसफर्स लाइक प्रीमियर लीग सागा द ईएफएल का फाइनल along with the premier league table along with the coming interesting set of premier league matches we shall be trying to do a watch along I guess of few of those if at least we will try to do the EFL Cup final for sure we'll try our level best to do that we could not keep our promise the last time but this time I hope we are able to keep our promise of doing the EFL Cup final watch along so हाँ guys अभी तक तो न्यूज़ यही है and हाँ up to you Yeah, I mean, that's it for now. Well, thank you for joining in. We have lots of news, and moreover, we have lots of videos coming on, and we will try to do the live stream as my brother said. And do join in for the future videos, and do like, share, and subscribe to our channel, and press the bell icon for future notifications. And yeah, that's it for now. Stay well, stay fine, stay healthy, stay fine, stay well. Goodbye, peace.